Hey, hi, good evening. Okay, guys, we are going to start our session within 5 minutes. Okay, uh, just let me know whether I'm an audible and my screen is visible to everyone properly. Good. Just do text me in a chat box. Hey, all. Good evening once again. Welcome to the class. And this is Sham. Today we are going to learn about the another topic of the wave optics, that is diffraction of light. Okay, this is a topic which we are going to discuss in this class. Before the class, what is the meaning of diffraction, how it will be takes place, and where we can see this diffraction pattern in our daily life, and how to find out the values of means the parameters which are assigned with the diffraction of the phenomena. We are going to discuss in this class. Okay, before starting this one, guys, let us take a quick recap what we discussed in a previous class. Okay, just a minute, I will do record this one quick now. Cool. Okay, in last class, what we discussed? Actually, we discussed about the condition for. Actually, it's a concept of interference of light. Correct? Now, interference of light is nothing but just superimposition of two waves. टू वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होता है ना, वो फिनोमेना को क्या कहते हैं हम? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. राइट, interference of light. Correct. In this interference, two kinds of interference will be takes place mainly. How? If the path difference will be zero, means amplitude will be same होता है दो वेव का, उस समय resultant amplitude will be increases, उसका intensity also increases. Correct ना? And that time intensity के लिए एक equation भी बनाता हम. Resultant intensity will be equal to I1 plus I2 plus 2 under root of I1 I2 cos phi. Your total this intensity is depending upon the cos phi value. Correct? And we write this one intensity in form of amplitude also. Right? Amplitude में लिखा था. Later on we find out the condition for this constructive interference and as well as destructive interference. Constructive interference क्या होता है? The amplitude of the same wave, two waves, okay, they are in the same direction. मीन्स वेक्टर एडिशन करने से क्या होता है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है. इससे एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है मीन्स इंटेंसिटी आल्सो ज्यादा होता है, बिकॉज एम्पलीट्यूड के साथ इंटेंसिटी का रिलेशन है ना. एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सॉरी intensity is equal to square of the amplitude, right? In this pattern, right? Based on that, we find out the condition for the constructive interference. Right now, condition value, path distance value n lambda, right? N lambda is the condition. Correct now.
Based on this one here, the value of n will be equal to 1, 2, 3, 4, like this. Right? What I'm saying? Okay, कोई तो problem नहीं. And next thing is that destructive interference. Correct now? And destructive interference में क्या होता है? First we find out the path difference also, right? Path difference का value क्या आ गया था? Path difference delta x is equal to a sin theta. Don't forget this one. Okay, this value we equate with here. Correct now? And condition for the destructive interference क्या आया था? X value will be equal to n minus 1 into lambda by 2. Correct what I'm saying? Just remember that what we discussed in the last class. Just a moment. Yes. Yes. Correct. Okay. इसके साथ साथ इंटेंसिटी का इक्वेशन भी लिखा था हम. करेक्ट ना. इंटेंसिटी इफ इट इज मैक्सिमम मींस क्या होता है, दो एम्पलीट्यूड का एडिशन होता है. मींस इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम मींस व्हेन दो amplitude of the equation we are going to add with a square. Correct ना. If intensity is minimum means subtraction a minus b whole square होता है. If a equals to b होता है ना, amplitude दोनों amplitude का wave of the amplitude will be same. That time a become होता है 2a का square होता है 4 times the a square. Okay, इधर क्या होता है, if a is equal to b means दोनों equate means it will be 0. इससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इससे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. करेक्ट ना. बेस्ड ऑन दिस कंडीशन एक्चुअली वी फाइंड आउट द इंटरफेरेंस बैंडविड्थ. बैंडविड्थ क्या है? मींस देखो इधर ये सोर्स है. सोर्स से क्या होता है? इट्स ए कोहेरेंट सोर्स. वेव्स आर इमर्जिंग लाइक दिस. करेक्ट ना. एट दिस पॉइंट दिस इज स्लिट 1, दिस इज स्लिट 2. Whatever the particles are there, no, only 2 particles are there here. 2 particles only they can behave as a source, because remaining all the portion of a wavefront will be blocked by the slit. Slit नहीं, वो band है ना, वो completely block करता है. Slit है ना, slit के ऊपर कौन सी particle होता है? Small aperture this is. Okay, that particle behave as a source of light. If this source of light, these are the two source of light here slit में, S1 and S2. If they reach the at exactly point C here क्या होता है? Due to the interference pattern, a bright fringe will be मिलता है, and then one dark fringe will be मिलता है, and again bright and dark, again bright. करेक्ट ना. ऐसे पैटर्न मिलता है ऊपर भी नीचे भी. राइट नाउ बैंडविड्थ का मतलब है ये ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, दोनों ब्राइट बैंड का बीच में डार्क बैंड है ना, इसका डिस्टेंस को हम कहते हैं बैंडविड्थ. what we are going to call this one as bandwidth. We are going to mention this one bandwidth the letter beta. Sir, is only we are going to call the bandwidth for the two bright fringes, distance between the two bright fringes? No. सिमिलर वे ये डार्क फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज है ना, ये भी बैंडविड्थ होता है. दैट बैंडविड्थ के लिए कंडीशन क्या था फॉर द ब्राइट फ्रिंज? कंडीशन एक्स वैल्यू क्या था? एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी. करेक्ट ना. दिस इज एन एक्स वैल्यू. इफ यू वांट I will substitute value of n means n value will be very होता है 1 2 3 4 like this. Okay, if you substitute the value of n is equal to 1 means it will give the first bright fringe. This is a condition for bright fringe के लिए. Okay, similarly for a dark fringe क्या होता है? For a dark fringe, dark fringe के लिए xn हाँ value will be equal to 2n minus 1 into lambda capital D upon small d. करेक्ट है ना.
This is for the dark fringe. So the value of n will be 1, 2, 3, so on. Correct now? Here, the brightness of the fringe is directly proportional to the wavelength of the light. The monochromatic light we are using, no, that wavelength may depend hota hai. Cool. And it is a nth dark fringe. Okay, you may substitute 1 near means first dark fringe ka distance batata hai. If you substitute 2 means second dark fringe, like this. Okay, if you want to a n, just मान लो this is nth dark fringe, sorry bright fringe. इधर और एक dark fringe होता है, इधर और एक bright fringe होता है. इसको हम कहते हैं n plus 1th dark fringe. If you want to write this one for n plus 1 means xn plus 1 is equal to n plus 1. Just a minute. क्या होगा? Yes. हाँ. n plus 1 lambda d by small d we can write it. ओके, ये दोनों ब्राइट फ्रिंज का है ना, ये दोनों को बीच में फ्रिंज विड्थ मिलता है ना, वो डार्क फ्रिंज विड्थ होता है. ये दोनों कंडीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंज. कंडीशन ब्राइट फ्रिंज के बीच में क्या मिलता है? डार्क फ्रिंज विड्थ मिलता है. वो विड्थ का इक्वेशन क्या होता है? लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी. Correct now? This is what we discussed in the last class. Similarly here also xn plus 1 को लिखो वैल्यू को, and बीटा वैल्यू को कैलकुलेट करने से क्या मिलता है? लैम्डा d by small d. Here this is what the here this is a dark fringe. Okay, this ये दोनों को बीच में मिल रहा है ना फ्रिंज विड्थ, ये क्या होता है? ब्राइट फ्रिंज विड्थ होता है. ये तो ब्राइट फ्रिंज विड्थ, राइट? Okay, here we took the monochromatic light. What if I'm going to take a white light? Yes, if you're going to take the white light means here central में the bright white light मिलता है. bright white light होता है आस पास में होता है ना, ऊपर और नीचे क्या होता है? कलर्ड फ्रिंजेस मिलता है. कलर्ड फ्रिंजेस. ओके, cool. This is all about we discussed in our previous class. Here we have two questions. Okay, question number 1 is that meanwhile if you have any doubt means please drop your doubt in the chat box. Okay, the question is that here 3 lights, red, violet, green, are used successively in a Young's double slit experiment. YDSE means Young's double slit experiment. Fringe width will be maximum for maximum fringe width will be which monochromatic light upon all 3 will give a maximum fringe width. Think करो एक बार. फ्रिंज विड्थ के लिए इक्वेशन क्या था? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी. करेक्ट ना? Here color के means you need to analyze the lambda. D and D here they are not depending on beta now. Okay, color based on the color. Okay, lambda means each monochromatic light, each color having their own wavelength. Suppose VIBGYOR में generally we are using these colors only now. VIBGYOR it is in the order of increasing wavelength. Correct now? Upon all the colors, which one having a highest wavelength here? Red color. Red color has a highest wavelength. Correct now? If red color having highest wavelength means here fringe width also having highest for the red color, because fringe width is directly proportional to lambda. Hence, lambda is greater for red color. Okay, hence correct option number A. Cool. Is there any doubt? Next, similar question, say on the same topic. In Young's double slit experiment, the intensity of central maximum is high. क्या बोल रहा है ना? इधर पैटर्न मिलता है ना, पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा है. ये सेंट्रल मैक्सिमा
C, इसका इंटेंसिटी होता है I. What will be the intensity of the same place if one of the slit is closed? Means इधर intensity मिल रहा है ना, ये intensity कैसे मिल रहा है? Actually इधर दो slits है, ये दोनों slits से light आ रहा है ना, light like this, इसलिए क्या हो गया, इधर intensity मिल गया. What if I'm going to close the slit? ये one slit को close कर दूंगा मैं. Now slit 1 is open, slit 2 is no. Intensity क्या होता है? Intensity क्या होता है? दो में आधा हो गया. आधा हो गया means how you are going to measure? Only based on the amplitude? No. Superimposition of wave only, it will gives the intensity. Means intensity is proportional to amplitude square. पहला amplitude कितना आता था? दो waves का amplitude, दो wave का amplitude एक को equal होता था. Now एक ही amplitude आ रहा है, means now the amplitude will become half compared to the previous one. Hence, if you substitute the value here, means I value will be equal to a by 2 whole square. I is equal to 1 by 4 a square. A square तो previous one, करेक्ट ना, इंटेंसिटी वाला. इधर 1 by 4 टाइम्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. राइट, हेंस करेक्ट आंसर इज 1 by 4. करेक्ट है ना? If you have any doubt, means please do drop your doubt in the chat box. Right? This is all about what we discussed in our interference of light. And moreover, guys, please do concentrate on our YDSC. It is very important. Okay, fringe width and wavelength. And if what if the monochromatic light is replaced by the white light? Okay, white light replace करने से क्या होता है? Intensity नहीं decrease होता है either side. Intensity of each and every band will be same ही होता है. There is no change in intensity. But by using white light, if the interference pattern will be formed, means central होता है ना, वो bright white light होता है, remaining all are colored होता है, like a waveguide color, mixture of all the colors. Cool. Okay, coming to the point, interesting thing is that diffraction of light. This is also very important topic for NEET and as well as exceptions. Okay, ये diffraction of light क्या होता है? देखो इधर two scenarios I choose here. Okay, first scenario is a door which is open a little bit only, एक थोड़ा सा open किया है, daytime. Okay, this is exactly daytime. Okay, light is coming from the door, high intensity है light. When it is coming, no, this is the only small slit, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर रहे थे ऐसे, करेक्ट ना? When the light enters here, actually light will go straight, means कितना आता है उतना जाना आता, बट इधर क्या हो गया है? It is spread up to this much. देखो इतना spread हो गया है, करेक्ट ना? And in this portion you might observe here little light is there, light is present. From this portion onwards, light also maximum at this point, as it is moving this direction and this direction. No, intensity थोड़ा कम हो रहा है, इधर also कम हो रहा है, means at the last point इधर क्या है? Completely dark. You observe like these things in your daily life, correct ना? इधर भी देखो सेकेंड सिनेरियो, एक कर्टन के बीच में, एक्चुअली ये कर्टन है, कर्टन के बीच में थोड़ा सा जगह था, ये जगह में क्या आ गया? लाइट आ गया. देखो इतना लाइट है. ओके, सेंट्रल में क्या है? बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है. ओके, साइड वाइज क्या हो रहा है? इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, इधर भी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट ना? एक्चुअली दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये क्या होता है बाद में बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, डिफ्रैक्शन क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है ना, लाइट आ रहा है, व्हेन इट इज एंटरिंग इनटू ए लाइट रीजन, नो, at the sharp
पॉइंट होता है ना, और शार्प पॉइंट में बेंड हो रहा है लाइक दिस. आई विल एक्सप्लेन यू. लुक एट हियर. दिस इज द ऑब्स्टेकल एक्चुअली. ओके, दिस इज अ लाइट एंटरिंग पॉइंट. ओके, दिस इज अ लाइट व्हिच इज एंटरिंग हियर. दिस शॉर्ट ऑब्स्टेकल है ना, इस पॉइंट में एड्ज जो था ना, एड्ज, वो एड्ज में टकरा कर इट विल बी गेट बेंडिंग लाइक दिस. Like this, the light rays are bending. Okay, this bending of light, this bending of light किधर बेंड हो रहा है? अराउंड एन ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल के साथ क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है. दिस फेनोमेना वी कॉल डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ऑब्जर्व करो केयरफुली. सेंट्रल में क्या हो रहा है? यू माइट ऑब्जर्व दिस इन योर डेली लाइफ व्हेन एक्चुअली देखो, जस्ट थिंक लाइक दैट. ए रूफ, ए हाउस है, बन रहा है हाउस. ओके, जस्ट इमेजिन दिस इज द हाउस. Okay, just imagine this is the house. Daytime light is here, on small hole is there on the roof of the house. Okay, through this small hole क्या होता है? Light will be enter means a light enter होने से inside the house इतना बड़ा सा bright fringe दिखता है. करेक्ट ना? ब्राइट फ्रिंज दिखता है. ये ब्राइट होता है ना, उसके बाद में लाइक दिस इट विल बी मूव नो सराउंडिंग में लाइट. उसका इंटेंसिटी क्या होता है? कम होता कम होता कम होता जाता है. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಫೆನೋಮೆನಾ ನಾವು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ, at this exact point a small hole, करेक्ट ना, बट इतना बड़ा सा फ्रिंज मिल गया, मींस डिफ्रैक्ट हो गया, बेंड हो गया. it is bended at the around the obstacle. This phenomena is called the diffraction of light. Clear? I don't want to continue further here. This is a diffraction of light. Next level. देखो इधर, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए सिमिलरली लाइक अ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्यों कंडीशन होता है? क्या होता है? देखो, सोर्स से आने वाला लाइट का वेव फ्रंट ऐसा होता है, करना दिस आर द स्फेरिकल वेव फ्रंट. एट इनफाइनाइट पोजीशन क्या होता है? प्लेन होता है वेव फ्रंट. आई एम गोइंग टू कंसीडरिंग द प्लेन वेव फ्रंट. देखो इधर, ये प्लेन वेव फ्रंट है, सेट ऑफ प्लेन वेव फ्रंट. इन ऑप्शन फर्स्ट वन, सेट ऑफ प्लेन वेव. ये वेव फ्रंट के बीच में होता है ना डिस्टेंस, वी कॉल दिस वन एज एन लैम्डा. लैम्डा क्या होता है ना, पता है ना नाउ? लैम्डा क्या होता है? मींस successive difference between our two wavefront is known as the lambda. Here plane में this is the lambda, correct ना? Here also observe here, this is lambda between our two waves. Here I'm mentioning no A B, थोड़ा सा ना वो डिस्टेंस है ना, वो लैम्डा है. ये लैम्डा, ये स्लिट है. स्लिट का विड्थ कंपेयर करने से लैम्डा कैसा है? लैम्डा वैल्यू इज वेरी मच लेस देन ये, करेक्ट ना? ये बहुत ज्यादा है, लैम्डा बहुत छोटा है. at this condition if it is incident on this portion means on the slit point है ना, इधर से इधर. now at this portion onwards the light क्या होता है? बेंड होने के लिए स्टार्ट होता है. इतना बेंड हो गया. स्लिट का साइज क्या है? बड़ा है. I will write in a exact portion. देखो, I will write this condition उल्टा, then you will might be understood by. ये वैल्यू है ना, ये बहुत ज्यादा है लैम्डा के साथ. ओके, ये बेंड हो रहा है. कितना बेंड हो रहा है? इतना, दिस मच, करेक्ट ना? दिस इज द फर्स्ट केस, लीव इट. नाउ कमिंग टू द सेकंड केस, ऑब्जर्व दिस. ये वैल्यू ऑब्जर्व करो, थोड़ा कम हो गया डिस्टेंस. स्लिट का डिस्टेंस है ना, कम हो गया. व्हेन द स्लिट डिस्टेंस कम होता ना, उस समय द बेंडिंग ऑफ लाइट बी मूव. द बेंडिंग ऑफ लाइट क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, राइट? कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, देखो इधर, दिस इज लैम्डा, दिस इज लैम्डा. स्लिट का विड्थ आल्सो ऑलमोस्ट इक्वल टू द लैम्डा. इमेजिन लाइक value of A is almost equal to the value of lambda, right? At that point क्या होता है? The bending of light क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है. At this condition only we are studying the concept of diffraction of light. Diffraction of light कब पढ़ रहा है हम? When
the size of a slit is less than or equal to the wavelength of light. वेवलेंथ ऑफ लाइट होता ना उस साइज के इक्वल होता ना उस समय पड़ रहा है. क्यों? इससे ज्यादा वेव क्या होता है, स्प्रेड होता है, मींस बेंडिंग बहुत ज्यादा होता है. इजी से वी कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न्स. दैट्स ऑल. क्लियर? डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं. ओके. फर्स्ट थिंग इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है ना उस समय बोल दिया मैंने. सेंटर में क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज मिलता है. Either side of a bright fringe क्या होता है, fringes मिलता है हमको, but the intensity will be keep on decreases. Now we need to analyze that one, how the intensity decreases, what will be the condition for that intensity decreases. Okay, and then first this is a bright fringe, first bright fringe. In intensity decreases means second bright will be formed here, just imagine. Okay, इसका bandwidth कितना था ये दोनों का. ओके, इसके इंटेंसिटी कितना था, कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट वन, लेट अस डिस्कस वन बाय वन. ओके, टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट आई विल टेक अ सोर्स ऑफ लाइट. ओके, सोर्स ऑफ लाइट ऑलरेडी आई टोल्ड यू ऑन दिस स्लिट. स्लिट है ना ये भी, दिस इज स्लिट. स्लिट के ऊपर कौन सा वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ था, प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेवफ्रंट को इंसिडेंट करने के लिए इधर मेरे पास सोर्स है, सोर्स एमिट कर रहा है स्फेरिकल वेवफ्रंट. करेक्ट ना? स्फेरिकल वेवफ्रंट को प्लेन वेवफ्रंट करने के लिए वी विल यूज लेंस. करेक्ट ना? लेंस इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, इफ एनी प्लेन spherical wavefront incident on this one, no, like this, it will be converted as an plane wavefront like this. This is we already know. When I started in a first class of a wave optics, I explained this one. Through the prism कैसे होता है, through the concave mirror, through the convex mirror, सब कुछ explain किया था. If you don't know means once again go through that video. Okay, no problem. Okay, this is a plane wave which is incident on this slit AB. Correct ना? ये plane wave में बहुत ज्यादा particles होता है, infinite number of particles होता है ना. They are all behaving like a source of light. They are behaving a source of light, and further on incidenting here, interference में only 2 particles था दोनों slits में. इधर क्या है, infinite number है. करेक्ट ना? इधर पार्टिकल है इनफाइनाइट, उधर कितना था, ओनली 2 particles at 2 slits. ओके, सपोज एक मान लो इधर ये पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल से अगेन इट विल बिकम स्फेरिकल वेवफ्रंट, हियर आल्सो स्फेरिकल वेवफ्रंट. करेक्ट ना? सारी के सारी कितना डिस्टेंस कवर करता है ना लाइट, लाइक दिस बेंडिंग होने पे इन दिस पोर्शन स्फेरिकल वेवफ्रंट की तरह डिस्टर्ब होता है. करेक्ट? इधर ब्राइट फ्रिंज मिलता है सेंट्रल में. कैसे मिलता है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करना है, अगेन वी नीड टू इंट्रोड्यूस वन मोर लेंस. व्हाई? हियर इट इज कमिंग पैरेलल, यू नो, वेव फ्रंट इज कमिंग पैरेलल. ये पैरेलल वेव फ्रंट को लेंस के ऊपर इंसिडेंट करने से अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड दे आर कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट बी. बात समझ में आ रहा है ना? Right? What I'm saying, these are the parallel lines which are incidenting on the convex lens means they are concentrating at one point. We call that as a focus. Focus में क्या होता है, incident होता है. When we are using this lens, so we can easily analyze that how bright fringe will be formed, how much distance they are maintaining, like that. ओके, ये तो पैटर्न बन गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. ओके, इट इज ओके. व्हाट इफ आफ्टर दिस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सम अदर फ्रिंजेस आल्सो फॉर्म, नो, बट उसका इंटेंसिटी क्या था, मिनिमम बोल दिया मैंने. ओके, सेकंड ब्राइट फ्रिंज मान लो इधर बन रहा है, इधर ब्लू कलर वाला इज अ सेकंड, दिस इज द फर्स्ट वन, वी कॉल दिस वन एज एन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. कैसे बन रहा है ये, एक्चुअली देखो, आई टोल्ड नो, पॉइंट ए एंड बी में
particle will explode the light in all the direction possibilities. Okay, now the light rays which are going in this direction, okay, it forms the bright fringe or dark fringe, पता नहीं कौन सा fringe है, मान लो bright fringe है, इधर form हो गया, correct ना? But when the light fringe will form here, no, central में, उस समय path difference between a and B will be 0. Path difference AB is 0 when central bright fringe form होता ना उस समय. ओके, ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है ना, सेम डिस्टेंस बी पार्टिकल कर दिया था सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज करने के लिए. नाउ द टाइम इज दैट हियर सेकंड ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रहा है ना, इधर सेम इज द पार्टिकल ए एंड बी आर परफॉर्मिंग द सेम पाथ डिफरेंस, मींस पाथ डिफरेंस 0 है क्या? बोल दो ना चैट बॉक्स में. हाय जैन उत्तर कन्नड़. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಇದೆಯಾ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ particle A, how much path it will be travel, B particle it also travel a same path, means path different, there is no difference in a path, both are traveling a same path, hence path difference will become 0. Okay, now I'm asking that if the intensity will be decreases in a both the side, if the bright fringe will be formed at this point, okay, A and B are both are means traveling a same distance or different distances, right? Obviously this different distance. क्यों? ये पार्टिकल इधर से इधर तक इंसिडेंट होता है and then इसको a short amount of index मिलता है, refractive index, and then it will be move along in this direction. But B particle को बहुत ज्यादा distance travel करना पड़ता है, refractive index भी आता है बीच में, and this central line also, correct ना? Then how to find out the path difference? if path दोनों का same नहीं है, difference है दोनों particle में, correct ना? कैसे कैलकुलेट करना है? लास्ट क्लास में बोला था मैंने, ये पार्टिकल से ये बी पी है ना लाइन, इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस पी मींस दिस लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन मारो, दैट इज बी ए एम. ओके, इफ यू draw one perpendicular line, this means from this line onwards, from A to क्या कहना है इसको, P, A to P, whatever the distance is there, no, particle A will travel no same distance which is traveled from the point M to P, and this BM is there, no, BM, this is called the path difference. This is what the path difference between a two ways here. क्लियर? कैलकुलेट करना है पाथ डिफरेंस कितना है, कैसे कैलकुलेट करना? सुनो, आई विल एक्सप्लेन यू. दिस इज, देखो इधर फ्रॉम ट्रायंगल, इधर एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं मैंने, ए बी एम, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एम. ओके, ये इधर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है? इधर बी एम कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट इज ये है. ओके, हमको ऑपोजिट साइड पता है हाइपोटेनस, मींस हियर वी कैन डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा, करेक्ट ना? sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट मींस bm, हाइपोटेनस मींस ये भी, bm को पता करना है, ये भी को इधर लेकर आना, ये भी इज इक्वल, ये भी sin थीटा इज इक्वल टू bm होता है, करेक्ट ना? ये भी इज नथिंग बट, ये भी क्या होता है, हाँ, ये भी इज नथिंग बट स्लिट विड्थ, दैट इज ये sin थीटा इज इक्वल टू bm. पाथ डिफरेंस मिल गया हम, अरे यार, राइट? पाथ डिफरेंस मिल गया. इफ यू नो अप टू दिस पॉइंट मींस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स एवरीथिंग इज इजी. देखो पाथ डिफरेंस कितना मिल गया, आई विल राइट हियर, दिस इज अ पाथ डिफरेंस.
If I write here m means this bm is there, no, bm, it will be the path difference. कितना मिल गया था, ये sin theta. I will call this equation number 1. Okay, here bm is the path difference. Okay, due to this path difference, इधर point P में कौन सी fringe form हो रहा है, whether it is bright fringe or dark fringe, इसको पता करना है, करेक्ट ना। इसको पता करने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा आपको, कहानी, स्टोरी, राजा रानी का स्टोरी नहीं, ओके, डिफ्रैक्शन का स्टोरी। क्या होता है, जस्ट मान लो ये दोनों है ना, bm, ये दो, इधर का पाथ डिफरेंस है लैम्डा, कितना, लैम्डा। कैसे सर, देखो मान रहा हूं मैंने, आई एम टेकिंग एग्जांपल, bm को क्या बोल रहा है मैंने, लैम्डा बोल रहा हूं मैंने। Just a minute. I'm taking that bm is equal to lambda. Okay, lambda means इधर वेव है, एक वेव इज अ वेव, ओके, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव के साथ लैम्डा डिफरेंस हो रहा है, मीन्स इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम, ओके लैम्डा है ना, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके सुनो, ये थीटा है, ओके, ये लैम्डा है, करेक्ट ना, ये लैम्डा है, इधर कौन सी फ्रिंज फॉर्म हो रहा है उसको बताना है हमको, करेक्ट ना। ओके, इफ दोनों वेव का पाथ डिफरेंस नहीं है, मीन्स दोनों वेव सेम डिस्टेंस चल रहा है, मीन्स पाथ डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, राइट। इफ इट इज जीरो मीन्स देयर इज अ फॉर्मिंग ऑफ ब्राइट फ्रिंज मिलता है। इधर क्या हो रहा है, पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया है। To explain this one, I will consider, I told you that from point A to point B, there are infinite number of particles are there. They are all behaving like a source of light. Right now, इधर ये 1 है फर्स्ट वेवलेट, मान लो ये लास्ट वन है ना, वो 100 वेवलेट है, 100 वेवलेट में लास्ट वन 100 है। ये लैम्डा है ना, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, बीच में और एक लाइन है, राइट। इधर को, इसको आधा को काट कर दो, काटूंगा मैं, काटूंगा मीन्स कट कर दूंगा। एक कट करने से क्या होता है, देखो इधर एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल है, देखो इधर, राइट। ये 90 डिग्री नहीं आया, जस्ट अ मिनट, आई विल erase this one and I will write again. Just a minute. Yeah, देखो इधर, करेक्ट ना। इधर what I will do, this is the distance है ना, bm, this is lambda I took, okay, this is a theta angle, right. From this right angle triangle you might observe this one here, this is the angle 90 degree, this is also angle 90 degree, करेक्ट ना। फॉर टू ट्राइंगल्स के लिए, फॉर दोनों ट्राइंगल के लिए इधर एंगल है ना, एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल पोर्शन, इट विल बी सेम, दो साइड सेम हो गया। देन टेल मी दैट टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी इक्वल, मींस साइड्स को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, इक्वेट मींस कंपैरिजन करते हैं, करेक्ट ना। ये लैम्डा होता है, b to m इज लैम्डा, देन व्हाट अबाउट दिस वन, मिड वन, दिख रहा है ना, ये लैम्डा बाई 2 होता है, लैम्डा बाई 2 होता है, मींस देखो इधर, दिस इज अ फर्स्ट पार्टिकल, सोर्स पार्टिकल, this is 100 particle, mid one means 50th particle, सुनो सुनो सुनो, first particle wave which is going in this direction, correct ना, 50th
पार्टिकल आफ्टर देन है ना 51 पार्टिकल, फर्स्ट एंड 51 पार्टिकल विच आर गोइंग, करेक्ट ना, ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, λ/2 आ रहा है, राइट। नाउ आई एम कंसिडरिंग सेकेंड वेव हियर 52nd वेव, ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, λ/2, एंड हियर थर्ड वेव, हियर 53rd वेव, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, अगेन λ/2, like that here when you come to the 50th light, 50th wave light and 100th one, ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आता है, देखो इधर ये लैम्डा है, ये λ/2 है, लैम्डा माइनस λ/2 कितना होता है, λ/2, अगेन पाथ डिफरेंस विल बी λ/2, मींस इधर at this point ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, डार्क फ्रिंज मिल रहा है, पता नहीं, बट इधर क्या हो रहा है, पाथ डिफरेंस तो λ/2 हो रहा है, ओके। पाथ डिफरेंस λ/2 मींस देखो इधर फ्रॉम वन कंप्लीट वेव के लिए पाथ कितना होता है, λ/2 से चल रहा है, मींस अनदर वेव इट विल बी गोइंग लाइक दिस, राइट ना। देन if they are moving like this means it is a destructive wave superposition, destructive superposition, no, hence this set of waves and this set of waves they are completely destructing, means at this point p point में क्या हो रहा है, डार्क फ्रिंज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज when we consider the path difference lambda, पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो डार्क फ्रिंज कितना, सॉरी कौन सी फ्रिंज मिल रहा है, डार्क फ्रिंज, बिकॉज पाथ डिफरेंस वी कंसीडर लैम्डा, करेक्ट ना, यस लैम्डा, दैट्स व्हाई, बट इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता था, पाथ डिफरेंस लैम्डा में ब्राइट फ्रिंज मिलता था, ओके मान लो ये फर्स्ट पॉइंट था, ओके आई विल टेक नाउ पाथ डिफरेंस, फर्स्ट क्या लिया था मैंने, bm is equal to lambda, okay, now मान लो I'm going to take the 2 lambda as a path difference, क्या है 2 lambda means same distance है ना, perpendicular distance, this is 2 lambda, 2 lambda means again this triangle को कितना सेट से डिवाइड करना है, 4, करना, लैम्डा को 2 सेट किया था, इधर 4 करना है, मींस 1 2 3 4, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 लैम्डा है, इधर से इधर तक bm, एंड देन इधर से इधर तक क्या, तो क्या होता है, लैम्डा होता है, करेक्ट ना, एंड इट विल बिकम λ/2, दिस विल बिकम 3 λ/2, देखो इधर बना दूंगा और एक बना दूंगा, पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये दोनों का डिस्टेंस है, ये सेपरेशन डिस्टेंस, करेक्ट ना, ये दोनों पॉइंट्स में पार्टिकल चल रहा है ना, राइट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कितना मान दिया मैंने, 2 लैम्डा ना, ओके, 2 लैम्डा से क्या होता है, देखो अगेन दिस सिस्टम को क्या किया मैंने, 4 भाग डिवाइड किया मैंने, करेक्ट ना, ये 2 लैम्डा था, ये आधा होता है, करेक्ट ना, आधा मीन्स लैम्डा, राइट, और ऊपर वाला λ/2 होता है, एंड दिस वन विल बी 3 λ/2, मींस इक्वली डिवाइड करना है, मींस सेट ऑफ ऑल द वेव्स व्हिच आर कंटेनिंग, नो whether they are making constructive interference or destructive interference, we need to divide equally, right, now equally divide करने से इधर पहले वाला वेव, this is 100 वेव, मींस इधर 50th वेव, this is 25 वेव, this is the 75th वेव, करेक्ट ना, इधर देखो फर्स्ट वेव चल रहा है, इधर से ग्रीन कलर ले लूंगा मैंने, इधर देखो दिस इज द फर्स्ट वेव, सेट ऑफ द सेकंड मींस 26th वेव विल बी मूविंग हियर, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, λ/2, करेक्ट ना, ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सेकंड वेव 27th वेव, दोनों के बीच में डिफरेंस λ/2, ओके छोड़ दो, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेट क्या है, लैम्डा एंड 3 λ/2, लैम्डा एंड 3 λ/2 डिफरेंस कितना आता है, लैम्डा 3 λ/2 माइनस λ/2,
इधर लैम्डा को कॉमन ले लो, कितना आता है देखो, अगेन लैम्डा बाई 2 होता है, करेक्ट ना, मीन्स इधर मान लो 26th वेव एंड इधर 26th राइट, इधर 51th वेव, करेक्ट ना, लैम्डा एंड लैम्डा बाई 2, ओ छोड़ो 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 छोड़ो, मिस्टेक हो गया मेरे साथ मिस्टेक हो गया। हाँ देखो इधर लैम्डा बाई 2 है ना, 26 लाइन एंड देन 51 लाइन, इधर लैम्डा है लैम्डा बाई 2 मीन्स डिफरेंस कितना आता है, लैम्डा बाई 2 आता है। अगेन इधर ये दोनों के बीच में 3 लैम्डा बाई 2 लैम्डा है ना, इसके बीच में मीन्स 51th वेव 76th वेव, 3 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2, ये दोनों का डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2, अगेन लैम्डा बाई 2, again 76th wave and as well as the 100th wave, 2 lambda minus 3 lambda by 2 means again lambda by 2, means each and every set में difference कितना आ रहा है, lambda by 2 आ रहा है। again if it is lambda by 2, this is the first wave, lambda by 2 means इधर से start होता है, again it will be a destructive one, means path difference lambda के लिए 2 lambda के लिए continuously 3 lambda 4 lambda like that up to n lambda, if you take the path difference means कौन सी इंटरफेरेंस मिल रहा है इधर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पता हो गया ना मुझे, आपको पता है ना ये नाउ, टेल मी इज इट अंडरस्टूड। n lambda होता है, n lambda ये stands for path difference, bm is equal to n lambda means it is destructive interference, destructive means intensity कम होता है, intensity नहीं होता है, understood no। path difference 0 होना चाहिए, clear। yes, now we need to find out that we okay, इधर dark fringe मिल गया आपको, क्या हो गया, डार्क फ्रिंज हो गया, इधर क्या था, ब्राइट फ्रिंज, मींस एक डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज के बीच में और भी फ्रिंजेस होता है, मींस हमको ब्राइट फ्रिंजेस को एनालाइज करना है इधर, मींस इधर लैम्डा 2 lambda 3 lambda like this, if you're going means you will get up to n lambda only dark fringe, we need bright fringe means that path difference should be between these two values, करेक्ट ना। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज में क्या होता है, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा के बीच में क्या हो रहा है, देखो इधर ये 2 लैम्डा था, ये लैम्डा था, इन दोनों के बीच में क्या है, 3 लैम्डा बाई 2 है ना, लैम्डा दिस इज 2 लैम्डा, ये दोनों के बीच में 3 लैम्डा बाई 2 है। we will take this condition once, we'll take this condition once and then we'll check whether it is satisfying or not for the bright fringe। okay, now what I'm going to take the difference है ना ये दोनों के बीच में, I will take this one as a 3 lambda by 2, if I'm going to take this 3 lambda by 2 means ऊपर का वाला क्या होता है, क्या होता है, अरे यार first one lambda by 2, next lambda 3 lambda by 2 and then 2 lambda था, now 3 lambda by 2 is the denominator one, next middle one क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट करना है इधर भी, ये 1 2 है, करेक्ट ना, ये लाइन है ना, इसका होता है लैम्डा बाई 2, इसका होता है लैम्डा, ये लाइन का होता है पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2। देखो इधर, देखो 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 इधर देखो, ये फर्स्ट लाइन फर्स्ट वेव and as well as the 3 lambda means it is 33 66 100 डिवाइड कर दिया, फर्स्ट एंड एज वेल एज 34th लाइन में है ना, 34th पार्टिकल, ये दोनों का बीच में कितना डिफरेंस है, लैम्डा बाई 2 माइनस 0 मीन्स लैम्डा बाई 2, दिस इज लैम्डा बाई 2 एंड सेकेंड वन 66 and 34, this is
लैम्डा, दिस इज लैम्डा बाई 2, अगेन इन दोनों का बीच में लैम्डा बाई 2 हो गया, करेक्ट ना। ये दोनों क्या हो गया, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। आपस में ये दोनों सेट में कितना वेवलेट्स होता है ना, वो सभी के सभी क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। रिमेनिंग थिंग इज दैट 66 से 100 तक वेवलेट्स होता है ना, ये वेवलेट्स दे आर रीचिंग दिस पॉइंट, ओके, without destruction, okay, here they will form a bright fringe again, okay, here they will form the bright fringe। कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन था ओके 3 लैम्डा बाई 2 में हो गया, 3 लैम्डा बाई 2 पाथ रेफरेंस bm शुड बी फर्स्ट वन 3 लैम्डा बाई 2, सेकेंड वन क्या होता है सीरीज 5 lambda by 2, next one 7 lambda by 2। if you want to write this series in a nth band means how you are going to write 2n plus 1 lambda by 2, this is the condition for the bright fringe here। bright fringe मिल गया हमको कौन सी कंडीशन में, 2n plus 1 lambda by 2 में, करेक्ट ना। I'm going to intense this one because it's very important। cool, मिल गया ना आपको, yes। now we need to find out here, देखो ये दोनों सेट में मैक्सिमम अराउंड 66 वेवलेट्स आर डिस्ट्रैक्टेड, ओनली 33 मींस ये पोर्शन है ना 3 भाग में डिवाइड किया था हम, ये टू बी, टोटल डिस्टेंस था ये, राइट, ये हो गया ये बाई 3, ये हो गया ये बाई 3, ये हो गया ये बाई 3, ये दोनों वेवलेट्स है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, ओनली दैट out of 100 only a by 3 part only reach this point and they are giving the intensity of light, means पहले बार में सेंट्रल होता ना सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी मान लो I नॉट था। now what will the intensity at this point, we need to find out इंटेंसिटी कितना मिल रहा है, करेक्ट, ओके। देखो इधर फॉर द फर्स्ट ब्रांड I नॉट है, करेक्ट ना। now intensity you know right, intensity will be equal to square of the amplitude, करेक्ट ना। इधर आप amplitude के स्क्वायर के लिए ये by 3 part only which are coming there, then first maxima है ना it will become a by 3 times the square, means it is nothing but a square by 9, means intensity क्या हो रहा है 1 by 9 times the primary one, primary intensity के लिए हो रहा है। next this is for the 3 lambda, if I'm going to take the 5 lambda by 2 means we need to divide this one for 5 stages, 5 stages में इधर 3 lambda by 2 में 1 by 3 part only came there, okay। if I'm going to get the secondary maximum means intensity उधर कितना आता है amplitude वाला means कितना waves आता है around 1 by 5 times से decrease होता है, means amplitude कैसे लिखता है a by 5 whole square, then it will become a square by 25, means around 1 by 25th time of the central bright maxima it will be obtained, करेक्ट ना। सेंट्रल मैक्सिमम कितना इंटेंसिटी होता है ना उसमें 25th टाइम्स डिक्रीज होता है इंटेंसिटी सेकेंडरी मैक्सिमम। if you're going to continue this one for the third one इधर मिलता है third, okay, then intensity of third one become a by 7 whole square, means a square by 49, means intensity क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, प्रूव हो गया ना। diffraction of light, that is what I am explained, and the light ray which is entering through a slit, width of that equal to the wavelength of light, okay, at the center you will get a brighter spot and continuously its intensity will be decreases either side of it, प्रूव हो गया ना। कंडीशन क्या था डार्क फ्रिंज के लिए लैम्डा 2 lambda 3 lambda like that n lambda, for bright fringe इधर कंडीशन 3 by 2 lambda से स्टार्ट होता है, 5 by 2 lambda
7 by 2 lambda, like that, 2n plus 1 lambda by 2. This is what the condition here for diffraction. Exactly opposite for the interference of light. Correct है ना? Hope it is understood. देखो इधर इंटेंसिटी वर्सेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ है. ओके, पहले वाला at midpoint में इंटेंसिटी क्या था? मैक्सिमम था. Okay, either side now intensity is decreasing. No, first time if it is the value of lambda will be, lambda means क्या होता है? मान लो ये lambda है, lambda means dark. Correct? 2 lambda means again it is dark, 3 lambda again dark. In left hand side also lambda, 2 lambda, 3 lambda are, you will get a dark width. Okay, ये middle portion है ना, इसको कहता है first one 3 lambda by 2, second one 5 lambda by 2, third one 7 lambda by 2. Negative side में with a negative sign minus 3 lambda by 2, इधर minus 5 lambda by 2, इधर minus 7 lambda by 2. देखो दोनों को इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, इधर हाइट सेम होना चाहिए. Right now, peak of the intensity, this is I means first one will be 3 lambda means amplitude कितना बार कम होता है? 9 times means a square by 9, a square by 25, a square by 49 times decrease हो रहा है like this. Cool. I hope it is understood, right? Let me know through the chat box. Okay, then what are the difference between interference and as well as the diffraction of light? Interference is due to the superimposition of two different wavelengths. Correct now, two different slits, two slits होता है ना, two slits के ऊपर होता है ना wave front, उधर से बनता है, only two wave fronts मिलता है. इधर क्या होता है? Infinite number of wavelets are present between our wavelets, I mean slits. Correct now. Next, fringe width is generally constant. Correct now. Alternative fringes available, but इधर क्या होता है? Fringe width होता है, but fringe width will be decreases, not constant one. Right? It is decreasing. कितना decrease होता है? Calculate करना, कर देते हैं, कोई problem नहीं. And all the maximum have a same intensity. Yes, all the bright fringes having the same intensity, but here क्या हो रहा है? Intensity is continuously decreasing either side. Correct now? And there is a good contrast between a maximum and minimum. Means maximum intensity and minimum intensity के बीच में we can easily calculate the width properly. Correct ना? देखो ये bright fringe है means ये dark fringe का होता है. A dark means we can exact present करता है इसके बीच में distance कितना. But इधर क्या हो रहा है? ये bright fringe बन रहा है means okay, ये bright fringe के थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होने के बाद इधर डार्क होता है और थोड़ा थोड़ा होने के बाद अगेन ब्राइट फ्रिंज मिलता है लाइक दिस. बट इट इज नॉट एट क्लियरली वी कांट एबल टू रिजॉल्व इट. इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट को खरीदना पड़ता है, माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट क्लास खरीद के आऊंगा, बाद में बता दूंगा उसको. ओके, नेक्स्ट, हाँ, विड्थ आई टोल्ड. नो, what is the width of the central maximum? How to find out this one? It's a very easy thing to find out. देखो इधर ये पाथ डिफरेंस था bm, ये एंगल था थीटा. इस पॉइंट में now you are getting a dark fringe width due to the path difference. dark fringe के लिए क्या होता है? lambda, 2 lambda, n lambda. Don't forget this one. Okay, now what I will do now, just consider from this point here it is a right angle triangle is there. स्लिट से स्क्रीन तक है ना डिस्टेंस, मान लूंगा d है. ओके, एंड फ्रॉम दिस सेंट्रल ब्राइट से इधर तक डिस्टेंस है ना, इसको हम मान लेते हैं x1. जन मान लिए x1 क्या है? विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. देखो इधर दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा होता है. ओके,
आफ्टर देन क्या होता है, थोड़ा सा डार्क पोर्शन मिलता है लाइक दिस. आफ्टर देन अगेन सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, बट उसका इंटेंसिटी क्या होता है, सेकेंड सेंट्रल मैक्सिमा है. दिस इज इंटेंसिटी थोड़ा कम होता है, करेक्ट ना. नाउ नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट टू this point, correct now, from this point to this point, whatever the distance is there, no, x1 I called here, correct. This is a x1 actually, it is not a width. Width means up to this point you need to find out. This is the total width of the central maxima. और bright fringe का complete distance बताना है up to this point, not that point. Okay, means simply find out the distance between distance of this one x1. Okay, then you multiply with 2, then it will give the width of the center maximum. How, I will tell you, listen, सुनो. x1 फाइंड आउट करना है. x1 फाइंड आउट करने के लिए हमको पता था पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस के लिए इक्वेशन क्या था, a sin थीटा इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस क्या था इधर, लैम्डा था. मान लो लैम्डा है, डार्क से मिलता है ना ब्राइट फ्रिंज वाला विड्थ वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, we are doing in this experiment, we are considering all the angles are small. In sin theta we can write as an tan theta, right. A tan theta is equal to lambda, कोई प्रॉब्लम नहीं. then tan theta डिफाइन करो for this triangle. ट्राइंगल क्या बोलना है इसको, a dash c d, a dash c d के लिए tan theta डिफाइन करने से क्या मिलता है, tan theta a into opposite side है x1 divided by adjacent side है capital D, distance between a screen and slit is equal to lambda. Actually we need to find out the value of x1, then to take these two terms right hand side, then x1 is equal to lambda d upon a. This is what the equation for not a center width of the central maxima, this is only half of that one. Now multiply this one with 2. Okay, then you will get the width, correct now. Then width can be calculated by using 2 times the lambda d upon a, correct. Right guys, this is all about today's class. Okay, I hope you enjoyed the class, and I know this is a quite theory and as well as the मैथमेटिक्स वाला, बहुत मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गया है. नो वरीज, टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन. ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट मींस प्लीज tell me in the next class, and we'll meet in the next class guys. Okay, this is all about today's class. Thank you for attending the class and take care. Bye bye.